Hello to all the viewers of Simple Digital School. Simple Batra welcomes each one of you today on DBMS Lecture-11. So today we have to start with Object-Oriented Database, which is also known as Object-Oriented Model or Object-Oriented DBMS. Today we have to cover this object-oriented model and the three models: hierarchical DBMS, network DBMS and relational DBMS we have already covered. You can get the complete playlist from the lecture 1 onwards in the description box. Dear all, I have tried to give a very concrete concept of object-oriented DBMS systems in this particular lecture through the proper diagrammatic representations as well as the concept both. So I request you do watch it till the end and do write in the comment box that how did you find this particular lecture. So let's go. Why we need the object oriented model? ज़रूरत क्या है इस मॉडल की? Firstly we should know this. So most important part is आज के डेट में it is the evolving economy, evolving industry. Everywhere growth is much more important. So integration and sharing is the need of today, due to which the new technologies like object-oriented systems came up into the picture. Now, आज के डेट में you have a different kind of operating systems available, you have a different kind of databases available, you have a various programming languages used by different programmers for the different applications, you have various spreadsheets to be integrated in your softwares, word processors to be used, and you have a AI, which is your artificial intelligence coming up everywhere in most of the domains. So in सबका integration करने के लिए we require the different evolving models and object oriented is one of them. आज के डेट में sharing of data, information, software components and various products in the various computing environments becomes essential to grow and to use the maximum resources in optimal manner. Now the beauty of object-oriented databases is the identity of its objects and inheritance concepts, which we'll be studying further in the detail today also. इनकी वजह से your object-oriented databases allows the referential sharing. Object databases are commonly used in applications that require high performance calculations and the faster results. So that is why your object-oriented model came into the picture. And there are few of the applications where the object databases are used. They are the real-time systems, architectural and engineering for 3D modeling, telecommunications, scientific products, molecular science and astronomy. These are few of the industries where the object-oriented databases are used. When we talk about object-oriented database, the same is also many times called as object database management systems also. And they are actually used for the object-oriented programming. जितने भी प्रोग्रामर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे काम करते हैं यूज सच काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस. नाउ the data is represented and stored in the form of objects. That is quite clear because we are saying object oriented database means सब कुछ जहाँ पर objects के through represent हो रहा है. Data is represented totally through the objects and stored in the form of objects here. So the multiple names are object databases or object oriented database management systems. In this particular object oriented database, ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटिंग अ रियल वर्ड एंटिटी, जिसके बारे में हमने रिलेशनल मॉडल में भी बात किया था दैट अ रियल वर्ड ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज एंटिटी. जब हम रिलेशनल मॉडल में बात कर रहे थे, यहाँ पर अ एंटिटी इज रिप्लेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एंड अ क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हियर. See, let's understand the class and object
First, here the object replaces entity. This I have told you earlier also कि जब हम entity की बात करते हैं, entity term हम use करते हैं relational model में, और यहाँ पर उसी entity को हम represent करते हैं through the object. So object is the another name of entity here. Suppose there is a one student whose name is Ajay here, correct? Now यहाँ पर you can see some of the data written in the ovals. What does it represents? Let's start from here. अगर एक student है अजय, तो उस अजय student का student ID होगा, that is unique ID. Student name होगा, student phone number होगा, student का gender होगा, that is male or female, और student का address होगा. Similarly, there can be multiple other properties also, like mother's name, father's name of a student. Now, what all these are representing here? These all are representing the properties, physical properties of a student Ajay. That is, एक student का ID बता रहा है, उसी student का नाम, student का phone number, student का gender, student का address. These all are called as physical properties or attributes or state of Ajay. And here in the ovals, these green colored are the various procedures, methods or functions for this student Ajay, that is get grade, get average, print marks. Means get grade of student Ajay, get average marks of student Ajay, print marks of student Ajay. These three basically represents all the functions, methods or procedures to be operated on this particular data which is stored in these particular attributes. तो अगर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, these are all the attributes and these are all the methods or functions here. ये एक एग्जाम्पल था स्टूडेंट का. So you have another student Piyush and third student Tilak, and all these students Piyush and Tilak will have the same kind of attributes. Means पीयूष का भी स्टूडेंट आईडी होगा, पीयूष का भी नेम होगा, पीयूष का भी फ़ोन नंबर होगा, पीयूष का जेंडर होगा, पीयूष का एड्रेस होगा, जो कि पीयूष वाले ऑब्जेक्ट में स्टोर होगा. राइट. सो ऑब्जेक्ट 1 इज अजय, ऑब्जेक्ट 2 इज पीयूष, ऑब्जेक्ट 3 इज तिलक. और ये तीनों किस तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं? स्टूडेंट टाइप के. और इस पीयूष के भी गेट ग्रेड्स, गेट एवरेज, प्रिंट मार्क्स रहेंगे. सिमिलरली तिलक के यू हैव दीज एट्रीब्यूट्स एंड दीज फंक्शंस और मेथड्स. बट हियर द ब्यूटी इज कि जब हम अजय की बात करेंगे तो वो अजय के डेटा पे ये फंक्शंस ऑपरेट करेंगे. जब हम पीयूष की बात करेंगे तो पीयूष के इस पर्टिकुलर डेटा के ऊपर ये फंक्शंस वर्क करेंगे. ये पीयूष के ही ग्रेड को दिखाएंगे, पीयूष के ही मार्क्स का एवरेज दिखाएंगे और पीयूष के ही मार्क्स का प्रिंट दिखाएंगे. तो यहाँ पर यू कैन सी कि इन दोनों के बीच में क्या है? बाइंडिंग है. राइट. और यहाँ पर ये जो एट्रीब्यूट्स हैं दे आर स्टोरिंग द डेटा, और ये जो फंक्शंस, प्रोसीजर्स या मेथड्स है दे आर स्टोरिंग द कोड फॉर ऑपरेटिंग अपॉन दिस डेटा. Right? And how these two will communicate with each other here means अगर एक ऑब्जेक्ट पीयूष को दूसरे ऑब्जेक्ट तिलक से बात करना है, कम्युनिकेट करना है, how it will be done? It will be done through the messages. So object oriented मेथडोलॉजी में या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस में जहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स को कम्युनिकेट करना होता है वहाँ पर दे कम्युनिकेट थ्रू द मैसेजेस. एंड दिस इज द स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 and 3 of them are
represented by a common class student. Correct? Here student is the name of a class which contains all the same kind of objects which represents the student 1, student 2, student 3 and so on. Now you can analyze here कि यहाँ पर हम क्लास नेम स्टूडेंट कह रहे हैं और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम टेबल के नेम को या रिलेशन के नेम को कहते थे स्टूडेंट. सो यू कैन correlate here. A class represents a similar kind of objects which have the common attributes and common methods, and these objects communicate with each other through the messages. Now here एक student की दो चीजें important है. One is state, other is behavior. Now this particular state is also called as properties, and this behavior is also called as functions, methods or procedures in the various books. Now this state represents the attributes or the physical properties of a particular object. जैसे कि student का नाम, student का unique student number, right? Student का residential address, student का date of birth. Similarly, there can be more attributes also, like student का phone number, student के father का नाम, student mother name and so on. Behavior, which represents the functions, methods or procedures which will operate on this particular data. For example, you can have a method write exam, listen, submit assignments, pay fee. Now let's correlate this with one object. So here name will be Tilak, T01 unique student number, address of Tilak, date of birth of Tilak. यहाँ पर जब ये methods कॉल होंगे या ये behavior कॉल होगा तो it will be Tilak dot write exam, Tilak dot listen, Tilak dot submit assignments, Tilak dot pay fee. So किसी भी एक particular student object से they can be correlated. Same process is applicable for Piyush object as well as for Ajay object. Here the most important part is whichever object will be invoked, उसी का data यहाँ से fetch होगा और ये methods उसी data के ऊपर काम करेंगे. So the data is stored here and the code is stored here. और ये जो पर्टिकुलर हमारा कोड है ये ऑपरेट करता है इस पर्टिकुलर डेटा के ऊपर. When you have a multiple objects of this particular sort, student 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. If there are 50 students in a class 5th B, so they all will come under the class 5B. Correct? So हमारी क्लास की जो कैटेगराइजेशन होती है या जो क्लास की ग्रुपिंग होती है वो इस बेसिस पर होती है कि उनके सेम काइंड ऑफ फिजिकल फीचर्स हो और सेम काइंड ऑफ बिहेवियर हो. यू कैन सी हियर अ रियल वर्ड एंटिटी इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट हियर, और एक ऑब्जेक्ट का स्टेट होता है और बिहेवियर होता है. स्टेट में ऑल द डेटा अबाउट द ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड और बिहेवियर में कोड अबाउट द डेटा इज स्टोर्ड. And in a particular program or in a particular code, multiple objects are used, and these two objects, any of these two objects like this to this or this to this or this to this can communicate with each other through the messages. Now the first feature is encapsulation. This hides the implementation details from the end users and displays only the needed descriptions. It binds the data and code together. For example, we always buy a soap on the basis of its color or fragrance, but we never look out for the method through which that soap is manufactured. Next is inheritance, that is reusability. हमने एक बार एक क्लास को डिफाइन कर दिया, उसमें हमने कुछ मेथड्स को डिफाइन कर दिया है, तो हम नई क्लासेस को क्रिएट कर सकते हैं थ्रू दोज एग्जिस्टिंग क्लासेस ओनली बाय रीयूजिंग all the methods of a particular class.
The new classes not only inherit the properties of a parent class, but they also have a unique own properties. Now if you have a class A here and you have a class B here, आपने क्लास A में कुछ मेथड्स को डिफाइन किया, से 4 मेथड्स को डिफाइन किया और इस क्लास को एक्सटेंड कर दिया क्लास B में. नाउ दिस क्लास B इनहेरिट्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ क्लास A. तो इसके सारे के सारे 4 मेथड्स दे आर रीयूजेबल फॉर B. यू नीड नॉट रीडिफाइन इट. आपको दोबारा से इसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. वो 4 मेथड एज इट इज़ यूज़ होंगे और इसके साथ आप कुछ और फंक्शंस इफ़ यू विश टू ऐड यू कैन ऐड इन दिस पर्टिकुलर क्लास B. इट इज़ लाइक जैसे एक चाइल्ड inherits the properties of his or her parents. Now there is a one class called as vehicle. और किसी भी vehicle के fuel amount, capacity, apply brakes, they can be the common functions. ये तीनों की तीनों, all these 3 have a common methods, fuel amount, capacity, apply brakes available from class vehicle and they inherit all these 3 functions automatically. और अपने functions को इसमें ये अलग से add on कर सकता है. So through a single class vehicle you can have a 3 more classes generated automatically here, which saves lots of time and lots of effort. So another property is association. That is अगर अलग अलग एंटिटीज़ हैं, अलग अलग क्लासेस हैं हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस में, तो उनको आपस में कैसे एसोसिएट किया जाएगा. नाउ द फोर्थ वन इज पॉलीमॉर्फिज्म. व्हेन वी से पॉलीमॉर्फिज्म इट मीन्स कि हमने एक मेथड को एक ऑब्जेक्ट में डिफाइन किया और उसी मेथड को हम वेरिएटेड फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं किसी और ऑब्जेक्ट में. दैट इज कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स को मॉडल करना becomes easier here in object oriented database models, that is using a particular method in a changed form in several ways in other objects. Now all these features you can study very deeply in the object oriented programming languages. I've given a glimpse of each and every feature here so that you can correlate it here with the database. Advantages: complex objects and relationships can be represented very nicely. Class hierarchy, अगर एक क्लास A है और क्लास B inherit कर रही है A को यहाँ पर, तो this is a hierarchy created and B is extended by C here. Similarly B को extend एक और क्लास यहाँ D ने भी करा और B को ही extend यहाँ पर एक क्लास E ने भी कर लिया. Now you can see कि A के फीचर्स B ने यूज़ किए और B के फीचर्स को E, C, D तीनों अलग अलग तरह से यूज़ कर रहे हैं. तो ये एक पूरी हिरार्की बन रही है ड्यू टू इनहेरिटेंस. और इनहेरिटेंस भी मल्टी लेवल, मल्टीपल, अलग अलग तरह की होती है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी स्टडी. नो इम्पिडेंस मिसमैच. नो नीड फॉर द प्राइमरी कीज हेयर. रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमें प्राइमरी की चाहिए होती थी, यहाँ पर ज़रूरत नहीं है. वन डेटा मॉडल फॉर रिप्रेजेंटिंग वन टू टू मैनी एंड मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स. तीनों तरह के रिलेशनशिप्स यहाँ हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट इज़ यू नीड टू हैव ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम्स ओनली. No need for a query language. High performance for certain tasks. Disadvantages: schema changes. In case there is some change accommodated in the schema, it cannot be done. Lack of agreed standards. There is no one agreed standard upon which it actually works. Lack of ad hoc query. Any query if comes up in between the usage of a system, it cannot be done. Lack of universal data model. There is no one universal data model which can be adopted by the different object oriented programming languages while developing the systems. Now there are certain examples of object oriented DBMS systems. Versant object database by Action, Objectivity DB by Objectivity, Object Store by Ignite Technology, Cache by InterSystems, ZODB by Zope,
And let's compare now the OODBMS and object-oriented database management systems. You can note here कि हमारे पास ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड मॉडल में क्लास होती है और रिलेशनल मॉडल में एक रिलेशन या टेबल होता है जो कि एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है. वी हैव ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल एंड इन रिलेशनल मॉडल वी कॉल इट अ टपल और रिकॉर्ड. Object instance means you have a different objects like Ajay, Tilak, Piyush, etc. of a particular class. Now variable, object oriented model में we call it a variable, state, attributes. Here we call it attribute or a column. Now यहाँ पर object oriented model में हम इसे कहते हैं method, functions, procedures या फिर behavior भी. यहाँ पर in relational model we call it a stored procedure which works on this data, and this is the difference here. Relational model is actually not suitable for the graphics and multimedia, and when we talk about object oriented database management systems, they can actually store the data and procedures, and automatically the data can be retrieved from the objects here, and they can also manage the multimedia and Java applets even. You can note here that relational model is not suitable for graphics and multimedia, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड DBMS सिस्टम्स अगर मल्टीमीडिया को सपोर्ट करते हैं तो लार्ज ट्रांजैक्शंस को हैंडल नहीं कर सकते. तो प्रॉब्लम्स दोनों मॉडल्स में है. सो व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस? You have a solution that is a hybrid approach, which is called as object relational DBMS systems, which provides you the capabilities of both object oriented as well as relational DBMS methods. At many places you might find the same written as object relational DBMS systems also, but object relational DBMS is a hybrid concept or a hybrid approach to solve the problems existing in relational DBMS system and object oriented DBMS systems. So I'll cover this in the next coming up lecture, that what is the object relational DBMS or database. Thank you everyone for watching us. Do subscribe the channel, like the video, and I'll be soon back with the object relational DBMS. Thank you so much. Bye bye. Take care.